Hello. So recently I was covering this heat transfer and calorimetry for 11th student. Then I got an interesting question. तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए नहीं बट ये डे टू डे लाइफ में भी हमारा यूजफुल है। अभी जैसे समर चल रहा है, समर सीजन, तो बहुत सारे घरों में हम लोग ये अर्थन पॉट, जिसको पीचर भी बोलते हैं या मटका बोलते हैं, वो खरीद के हम लोग लाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम नहीं करता है। लाइक फ्रीज में जैसे वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बट अर्थन पॉट क्या होता है कि एक नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करता है। अभी नेचुरल कूलिंग कैसे प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत सारे लोगों को पता रहता है बट वो उनको इतना डिटेल में नहीं पता रहता है कि वो कैसे करता है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो अर्थन पॉट है ना, तो इस पे पोरस होल्स होते हैं, बहुत पतले छोटे छोटे बहुत स्मॉल होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर है जो अंदर जो पानी है, वाटर है, वो स्लोली बाहर आता है, स्लोली। और वो अर्थ सरफेस पे जब आता है तो वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इट रिक्वायर्स enormous amount of heat energy। मतलब वो वाटर में है और वेपर में आ रहा है, तो वाटर क्या है, सॉलिड लिक्विड स्टेट है, और वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है। तो गैसियस स्टेट में आने के लिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। वो हीट क्या करता है, वो वाटर से ही लेता है, और वो वाटर से हीट लेता है तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है, और इसका ये हीट लेके वापस हवा में चला जाता है, राइट। अब एक दो चीजें हैं कि कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि अर्थन पॉट है वो एक सीजन के बाद कूलिंग कम हो जाता है उसका, जनरली उसके पीछे की रीजन है कि वाटर में मिनरल्स क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो पोर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मिनरल जो प्रेजेंट है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह जो है, वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो उसके कारण से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है, दैट इज वाई इट्स कूलिंग रिड्यूस हो जाता है। एक और पॉइंट क्या है कि अभी जो मार्केट में जो अर्थन पॉट आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए उसको क्या करते हैं, उस पे पेंटिंग कर देते हैं या कोई ऐसा पेंट उस पे चढ़ा देते हैं, बट वो सही नहीं है। ठीक है, जो नेचुरल जो मटका है, नेचुरल जो हमारा अर्थन पॉट है, वो बेस्ट होता है हाउस होल्ड यूज के लिए। ओके, तो while if you're going to purchase a earthen pot, make sure that it should be natural, no paint is on their outer surface। नाउ क्विकली हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर इट इज टू बी केप्ट इन ए pitcher having porous walls। Water comes to the outer surface very slowly and evaporates. Most of the energy needed for evaporation is taken from the water itself, and the water is cooled down। Assume that the pitcher contain 80 kg of water। तो mass of the water उसमें कितना दिया हुआ, हमारा 80 kg दे रखा है, right। and how much water is coming out, right? So 0.2 gram per second, this amount of water is coming out। Okay, and they are telling that how much time it will take, they are telling you to find the time, and delta T, change in temperature, they have mentioned 5 degrees Celsius here, right here, that calculate the time in which the temperature decreases by 5 degrees Celsius। The specific heat capacity of water they have given, that is S, that is 4200 joule per kg per degree Celsius। It is the SI unit, and latent heat of vaporization also they have given, that is how much, 2.27 into 10 to the power 6 joule per kg, joule per kg they have mentioned it। So we have to apply simple, like for change in temperature of 10 kg of water, how much heat has to be removed। जो अंदर 10 kg वाटर है उसका हीट रिमूव करना है, और वो हीट रिमूव कौन करेगा, जो यहाँ पे ये वेपोराइजेशन हो रहा है, राइट, इवेपोरेशन हो रहा है जो यहाँ पे।
तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिमूव होगा डेल्टा, दिस इज दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ms delta t. So m is 10 kg and the s is 4200 and delta t is 5. So after solving this, it is 42 into 5 into 10 raised to power 3 joule. Okay, we have assumed the time taken is how much. So in that time, how much water is going to convert into vapor? So total mass that is going to convert into vapor is how much? 0. Delta m. Delta m we can take it because m we have taken for this 10 kg. So delta m, that is that much amount of water is going to convert into vapor, and that is how much? 0.2 into 10 raised to power 3, because I am converting this gram into kg and into delta T. How much amount of heat does it require? How much amount of heat does it require? That is how much? Delta Q2, that is 0.2 into 10 raised to power minus 3 into T into 2.27 into 10 raised to power 6. So after bit simplification, 0.2 into 2.27 into 10 raised to power 3 into T. Now this delta Q1 we have to equate to delta Q2, right? So 4, okay. Or this we can also do one thing, that delta Q2 equal to delta Q1. Okay, so 0.2 into 2.27 into 10 to the power 3t, and that is equal to 2 into 5 into 10 to the power 3. This 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel out, and the t is how much? 42 into 5 upon 0.2 into 2.27. This is going to give you 462.462.55 second, or if you divide it by 462.55 second by 60, this is going to give you 7.7 minute, right? So this is the way we can deal with this question. I hope you understood this. Thank you.